तो इस वक्त हम ग्रैनविल सी विलेज पे खड़े हैं और मेरे सामने इसकी एम्बियंस आप देख सकते हैं वैंकूवर की। और ये है हमारा ग्रैनविल सी विलेज। ये हमारे सामने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, लोगों के अपने पर्सनल याट्स हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं इसके नीचे। आइए मेरे साथ। Beautiful. Thank you. Are you from India? We are from Delhi, India. Okay. These have been made by you. These have been painted by you. The entire floor. Only this area. Okay. Including that bear. Very beautifully you have Very painted. beautiful, very beautiful. Very beautifully you have I painted. have all these painting the cards, if you like. Like this bear have a Okay, next time we will come. yes. We will definitely have it. Today we are just having a bird's eye view of the entire village. Thank you. Thank you. दिखा। Hello. इनिशियली तकरीबन 125 साल पहले ये एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इसको डेवलप किया गया था। यहाँ पर इंडस्ट्रियल शेड्स हुआ करते थे, फैक्ट्रीज़ थी, लेकिन धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियल शेड्स बंद होते गए, फैक्ट्रीज़ बंद होती गई, जैसे आप ये देख रहे हैं। और पूरा का पूरा जो एंटायर विलेज है ये धीरे धीरे करके खाली हो गया। तकरीबन 1960 तक ये एक घोस्ट विलेज बन गया, एक घोस्ट एरिया था और यहाँ पर कोई भी नहीं था। आस्ता आस्ता कुछ आर्टिस्ट और आपके जो थिएटर ग्रुप्स थे उनके नोटिस में आया और उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू किया। उसके बाद ये आस्ता आस्ता बहुत एक अट्रैक्शन का सेंटर बन गया और बहुत लोग आना यहाँ शुरू हो गए और आज लाखों लोग इस जगह पर आते हैं और बहुत वैरायटी है इस एरिया के अंदर यहाँ फूड क्यूजिन्स के लिए। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर जो दुनिया के किसी और कोने में नहीं हैं। आइए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं आज। I swear he's gotten bigger. It's kind of all fluffed time I up saw right him. now.
और ये है ग्रैनविले आइलैंड की फार्मर मार्केट। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं जो बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आइए हम